इस चीज पे कि हाउ यूएस इज गोइंग टू रिटेलिएट टू रशिया एंड चाइना, दीज टू कंट्रीज, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी ट्रम्प्स पॉलिसी फॉर रशिया एंड चाइना ना, आप इस चीज के ऊपर खास ध्यान रखना. थोड़ा सा कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस एंड क्लोज वॉच ऑन द डेवलपमेंट स्पेसिफिकली दैट ट्रम्प डज, because it has been observed that whatever developments Trump will do with respect to Russia, China in the next few months, you will definitely find at least two questions in the mains in your PSIR optional next year in paper 2 from that particular area. बाकी हाउ डज यूएसए लुक एट रशिया, हाउ डज यूएसए लुक एट चाइना, वो ये वाली थीम में आज पार्ट डी में हमारा क्लियर भी हो जाएगा. तो यू विल गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल बेस. बाकी इसके बाद इट विल बी मोर ऑफ अपडेटिंग पार्ट. ठीक है, तो चलो लेट्स गेट गोइंग. सबसे पहला टर्म जो है दैट इज अ टर्म विच वी विल स्टडी कॉल्ड पोलैरिटी. तो polarity is an important term, sir. Polarity is basically what? It's a thesis in international relations. Okay. Now, what does this thesis of polarity mean? Polarity says that our focus is on understanding that how is power distributed in international system. So, what is polarity concerned with? Polarity is concerned with how is power distributed in the international system. Now, what do we mean by that, beta? We mean by that कि when we talk about the word polarity, polarity in this context means कि every country possesses some power. Possesses some power का मतलब है कि भाई it may be economically strong, politically stable and militarily strong. So every country which possesses some power, that is one part of it. Polarity studies that how do countries execute this power outside in the international system. If a country possesses power, sir, country will never keep the power to itself, na beta. It will always display that power. So whenever a country tries to display power, polarity as a thesis where scholars are associated, they try to see that how do countries basically try to distribute that power in the international system by showing that power in the international system. Are you getting the point? That is why you see when we talk about the point in the syllabus called collapse of Soviet Union, when we say unipolarity and American hegemony, these are three examples where we will see that when the Soviet Union collapsed, the polarity thesis tried to study that how does power now get distributed in a system which was earlier bipolar. A bipolar system where US was one pole, Soviet was one pole, both aggressively displaying power. How is power now distributed that when one pole vanishes, which is the Soviet pole? When we say American unipolarity, sir, unipolarity means that there is only one power now which tries to distribute power in the international system in such a manner that it dominates what is called as the entire international system. आप समझ रहे हो बच्चे पॉइंट को? यूनिपोलैरिटी, वन पावर. सिंपल लैंग्वेज में यूनिपोलैरिटी मीन्स वन पावर, बट बेटा यूनिपोलैरिटी मीन्स through the polarity thesis that US as a country is now going to display power in the international system in such a manner that it will distribute power to assert its dominance. See, please understand the word distribute. What is the meaning of the word distribute power in the international system? Distribute means that you will display power. You will display power. And you will display such power through which you will try to assert what is called as your American hegemony. In a simple language, हम ये कह रहे हैं कि US in a unipolar system will try to display power where US will try to show itself that it is the sole superpower. And it will not accept any competitor because it has just decimated a competitor. Getting the idea? Decimated the competitor Soviet Union. Will not accept any competitor means that it is now the sole superpower. So unipolar. But sir, unipolar moments are always short-lived moments. ये याद रखना एक पॉइंट. क्वेश्चन अगर इस पे आए तो कि why unipolar moments are short-lived moments are because a country which is a unipolar power can never ever exert influence on every country in the world and get every country in the world to display the same behavior as it wants to get it displayed. Sir, America can never remain the sole superpower throughout the period of history because America
can never create a system where every country in the world displays a behavior that America wants them to display. So, sir, the principal fundamental problem with unipolarity is what? That unipolarity is a rejection of global diversity. Because when you are a unipolar power, sir, you are Dada of the world, Gunda of the world. And when you see it in the context of mafia, sir, no mafia will ever tolerate other mafia groups. That is why you see there is always what is called as gang wars. आजकल चल लिया है ना लड़का बिश्नोई सरकारी गैंगस्टर गुजरात की जेलों से चला रहे हैं उसको हमारे मोटा भाई तो आप इस चीज को समझो द वर्ल्ड ऑल्सो ऑपरेट्स इन द सेम वे अब आते हैं द सेकंड टर्म विच इज कॉल्ड बेटा वॉशिंगटन कंसेंसस What is the meaning of the word Washington Consensus? Washington Consensus basically is an economic package. It is designed by the World Bank and the IMF. And this economic package designed by two agencies called the World Bank and the IMF is designed to ensure global economic hegemony of US. Sir, we study Washington Consensus in two different ways, beta. In economics, Washington Consensus is basically a reform package. But the same Washington Consensus in international relation means that it is a package which is designed by World Bank and IMF so that USA's economic hegemony is unchallenged. Now, please understand one thing, sir. Any country which tries to deviate from the Washington Consensus is a country that will not accept the reform package proposed by the IMF and the World Bank, is a country which will not accept that US has a hegemony over them. That means that the fundamental clash between America, Russia today and America, China today can be explained through the rejection of both of the Washington Consensus. Why? Because both of them basically do not want American economic hegemony to be promoted. और यहाँ पर आपको साइड पॉइंट फिर मैं बता रहा हूँ बेटा ध्यान रखना इस चीज का कि ट्रम्प विल ऑलवेज नाउ ट्राई टू गेट बिहेवियर आउट ऑफ स्टेट्स in the international system where countries in the world accept the economic agenda of IMF and World Bank, that is, they accept the Washington Consensus. And Trump will try to basically reward states that will go for Washington Consensus, penalize states that will not go for it. That is why you see he will definitely have a troublesome time with China. But he will not have a troublesome time with India. Because India is a country up in arms for sale, sir. It says we are willing to go for any consensus, any Washington consensus. हमें खरीद लो, हम बिकने के लिए तैयार हैं. हम 2000 साल से ऐसे ही थे सर, गुलाम, अवेलेबल फॉर सेल फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी. अभी परसों when we do day after tomorrow we have a class of fundamental of economics ना सर. वो fundamental of economics में when we study मोदीनॉमिक्स, जो एक नया शब्द कॉइन किया हुआ है भक्तजनों ने मोदीनॉमिक्स करके, आप देखोगे कि उसमें मैं आपको एक स्कॉलर पढ़ाऊंगा सर. उस स्कॉलर का नाम है फिशर. वो मछली का काम नहीं करता. फिशर फिशर एक इकोनॉमिस्ट है सर. और वो इकोनॉमिस्ट जो है फिशर का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सर कि ही इज द ब्रेन बिहाइंड द वॉशिंगटन कंसेंसस. एंड सिंस 2014 इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी इज ड्रिवन बाय फिशर. एंड ये मैं नहीं बोल रहा. फ्रॉम 2014 टिल 2025, नाउ 24-25, इफ यू पिकअप द इकोनॉमिक सर्वे, आप एक टास्क करके देखना. आप इकोनॉमिक सर्वे में जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ में कंट्रोल एफ करते हैं तो फाइंड आ जाता है ना ऑप्शन. आप हर साल के इकोनॉमिक सर्वे में वो फाइंड में ना फिशर डाल के देखना, आपको हर इकोनॉमिक सर्वे में वो बंदे का नाम मिलेगा कोटेड. आप फैक्ट बता रहा हूँ आपको सर, आप चेक कर लो. फिशर की इकोनॉमिक पॉलिसी इज बीइंग अडॉप्टेड इन इंडिया. तो सर ट्रम्प विल बी द हैप्पीएस्ट विद इंडिया बिकॉज वॉशिंगटन कंसेंसस विल नॉट बी चैलेंज्ड बाय इंडिया. ठीक है जी, वॉशिंगटन कंसेंसस याद रखना. और वॉशिंगटन कंसेंसस का कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूएस चाइना रिलेशनशिप जरूर याद रखना, बिकॉज यहाँ पे आपको डिवियंस दिखने वाला है आने वाले समय में. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी. पहला क्वेश्चन आता है सर, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन. सर द स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस नंबर वन ऑफ द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन वाज अ टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट इन द वर्ल्ड एट अ मेगा लेवल. Sir, lot of countries which were part of the erstwhile Soviet Union were now territorially readjusted. When we say they were territorially readjusted, one thing became very clear. कि भाई many new independent republics are going to be born now. If many new independent republics are going to be born,
because of the territorial readjustment, then beta one thing is also very clear. One thing that is now going to be very clear is that these new countries that are going to emerge after the territorial readjustments are again going to witness a competition like the competition we saw at the time of the birth of the Cold War. Go back to the same time. Sir, what happened when the World War II got over? If you remember, we have discussed this, that when the World War II got over, at that time, one thing became very clear, that there was an intense competition between America and that of the Soviet Union to woo those countries so that those countries basically gravitate into the orbit of either communism or capitalism. Now, with the demise of the Soviet Union, with readjustment of the territorial borders, you are going to witness what we call as a national resurgence. What do we mean by the word national resurgence? National resurgence here, beta, means that now when the new countries are going to be born, America will try to make an attempt, as per the polarity thesis, to assert their unipolar power over it. And if America will try to assert its unipolar power over those countries, then one thing is also very clear. These countries, which are nationalist countries, which are now born after the demise of the Soviet Union, will try to keep themselves free from the control of America. So that means, ध्यान से सुनो बेटा, that means कि strategically speaking, there is going to be a part of the world. देखो आप समझोगे ना ध्यान से बेटा तो आपको चीजें क्लियर होंगी, लार्जर पिक्चर क्लियर होगी. दैट मीन्स कि देयर इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन where countries will emerge. They will try to remain nationalist, where they will not want to accept the America's Washington consensus or American unipolarity, but America will try to basically force it upon them. And that is why now you see today, but let's try to look at the larger level of conflicts in the world presently. Where is the conflict happening? Ukraine, part of the territory erstwhile Soviet Union, which is an area which is always a global flashpoint. Central Asia, and Central Asia के अंदर conflict नहीं हो रहा. All territories periphery to Central Asia. See the territory peripheral to Central Asia, Iran under conflict, Afghanistan under conflict, Pakistan perpetually conflict. That means कि sir, present day conflicts can be very easily explained through the prism that these are countries which have resisted American unipolarity. But these are countries that have also resisted Russia's attempt to basically bring them back into the same fold. Ukraine is doing that. So one thing is very clear today. Afghanistan में भी वही चीज हो रही है सर. Afghanistan was never a part of the Soviet Union, but throughout the history of Afghanistan, Afghanis had kings which were close to the Soviet ideology. They are today resisting by saying that we will not follow anybody. So let's understand one thing, sir. Ki the biggest strategic consequence here of collapse of the Soviet Union is a power vacuum in a big part of the world. And this power vacuum is in the territories which basically became independent, or we say that they became basically new territories after being liberated from the Soviet Union. Second important point, sir. The second strategic consequence of the collapse of the Soviet Union is a very important consequence, beta, that there is an emergence of other non-state actors in the international system. Other non-state actors. What does this mean? This means a very important thing. That today, in the post-Soviet era, we do not see state as the only dominant actor that tries to exert influence upon sovereign states. We see certain non-state actors also trying to assert their influence over sovereign states. And very important point, beta, what I am about to say, that these so-called non-state actors try to assert their influence over other sovereign states by wrapping up their influence under the ideology of globalization. Under the ideology of globalization. See, this is a very deep point if you understand it. Every multinational corporation MNC today, whenever it wants to do business in another country, what is it trying to say? Ki sir, allowing business in the other country will mean more benefit to you, more integration of the people. But you change these rules for us so that it will become easier for us to do business in your country. Now, sir, remember one thing, a country can never openly accept this.
इट कैन नेवर ओपनली से कि भाई I am going to change my rules just because I want you to come and do business in my country so that you give me some kickback in the form of money also. और मैंने आपको क्या बोला, दे रैप दिस इंटायर थिंग अंडर द आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. यू नो हाउ? सी द ब्यूटी बेटा, वर्ल्ड बैंक क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट कॉल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. दैट्स हाउ यू रैप इट अप. तभी आपने देखा 2014 से एक ही नरेटिव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यही चल रहा है सुबह से रात. और हर बार सरकार अपनी अचीवमेंट में क्या गिना रही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली इन अ सिंपल लैंग्वेज मीन्स you are accepting violation of your sovereignty by non-state actors like multinational corporations, allowing them to control your sovereigns, that is your people, without the consent of your people, in the name of globalization, in the name of benefits of development. और ये चीज ऑब्जर्व करना, ये जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ ना बेटा, अभी आपके सामने आने वाले 1-2 महीने में एक केस स्टडी आएगी न्यूज में, इसका नाम होगा स्टारलिंक. वो पागल है ना एलोन मस्क, वो गौतम अडानी है वहां का, उसका हाल भी वही होगा जो अडानी का यहाँ होगा 2028 में, आप देखना. वो स्टारलिंक लेके इंडिया में आना चाहता है. और अभी वही चल रहा है गवर्नमेंट के बीच में और स्टारलिंक के बीच में, नेगोशिएशन चल रहा है. गवर्नमेंट कह रही नहीं नहीं आप ऐसे कर दो. हम एक ऐसा नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टारलिंक को बताएंगे कि तू क्या करेगा. सर, आप स्टारलिंक को नहीं बताओगे, वो आपको बताएगा. आप दुनिया को गुमराह करने के लिए कह रहे हो. क्योंकि जब जेफ बेजोस का फोन आया था ना कि इंडिया में अमेजोन तभी आएगा कि जब जीएसटी का लॉ लाओगे, तो चुपचाप बैठ के जो है जीएसटी का कानून बनाया गया था. और बाय द वे हमारे पूरी सर ने भी कंट्रीब्यूशन किया जीएसटी के लॉ में सर, क्योंकि जो एक ऑफिसर इन्वॉल्व था जीएसटी का वो उनका स्टूडेंट था. और वो स्टूडेंट जो है वो उस समय अरुण जेटली के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ जीएसटी लॉ में बैठा था. और उस समय पूरी सर की भी वार्तालाप हुई थी उस कमेटी के साथ, बिकॉज उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू में कहीं पर एक रिक्वायरमेंट थी, तो उस ऑफिसर ने सर के साथ कनेक्ट करवाया था. अब बताना मत सर को, सर मारेंगे मेरे को. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं कि सर, जब जीएसटी का लॉ बना तो वो लॉ इसलिए नहीं बना कि वो डोमेस्टिक लेवल पे लोगों को बेनिफिट देगा. आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव यही है, वो जो उनका छोकरा घूम रहा है इधर उधर, वो यही तो कहता है कि जीएसटी से इकोनॉमी बर्बाद हो गई. कहता नहीं, कहता आपके सामने. क्यों कहता है वो? भाई उसकी खुद की इकोनॉमी तो सही चल रही, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम ये है कि भाई जेफ बेजोस ने फोन करके ये काम करवाया. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सर, इट विल ऑलवेज बी रैप्ड अप under this logic. So this is one of the very serious strategic consequences which is called erosion of sovereignty today. और इस पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, erosion of sovereignty by non-state actors under the wrapped up ideology of globalization. So try keeping a broad watch upon this in your mind, specifically when you are looking at all this which is there happening around you. थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा इसके बारे में, ठीक है जी. और लास्ट कॉन्सिक्वेंस की अगर हम बात करें तो लास्ट कॉन्सिक्वेंस बेटा ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स टुडे इन द पोस्ट सोवियत एरा आर लेस ऑफ मिलिट्री, मोर इकोनॉमिक, एंड मिलिट्री सपोर्ट्स इकोनॉमी. लेस ऑफ मिलिट्री, मोर ऑफ इकोनॉमी, military supports economy. That means in one word if I put it, the fight everywhere is of resource, and militaries have now become national instruments to support this resource based war. Sir, the fundamental problem between Russia and Ukraine is not that Russia wants control of Ukraine. That is just one way of looking at it. At the heart of Russia-Ukraine issue is that Ukraine is geographically positioned in this manner in Europe that if Russia has control over Ukraine, it can supply oil and gas to Western Europe. It can connect Eurasia with Western Europe through Ukraine. The conflict between Israel and Hamas is not a conflict between Israel and Hamas, sir. At the heart of Israel-Hamas conflict is the geopolitical location of Iran. Because if Iran becomes a stable, peaceful country, Iran with its natural gas and its geographical location of connecting Eurasia with that of waters, warm waters, will become economically so strong and powerful that it will eclipse the Sunni world also and the Jewish world also. सर, जो इजराइल है क्या उसके पास कोई ऑयल है? क्या जो इजराइल है उसके पास कोई गैस है? फिर क्या वो पागल का बच्चा है जो लड़ रहा है?
उसको किस बात की लड़ाई है? उसको लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जो ये सुन्नीज है, जिसके साथ वो अलायंस करके बैठा हुआ है चुपचाप, उनका वो एजेंट बन जाए ऑफिशियल लेवल पे कि शिया पावरफुली इमर्ज ना करे। गेम समझ रहे हो? क्योंकि अगर शिया इमर्ज कर गया ना बेटा, तो शिया के साथ समस्या क्या है कि ईरान इज क्लोज टू रशिया सर। नाउ इमेजिन द लार्जर पिक्चर, ईरान कनेक्टेड विद यूरेशिया, कनेक्टेड विद रशिया, रशिया कनेक्टेड विद यूरेशिया, कनेक्टेड विद यूक्रेन टू वेस्टर्न यूरोप। भाई साहब पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल है, पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल है, सारा खेल ही यही है भाई साहब। कॉन्फ्लिक्ट्स आर मोर इकोनॉमिक, मिलिट्रीज आर टूल्स यूज्ड टू सपोर्ट इकोनॉमिक्स, यही स्टेटमेंट आएगी क्वेश्चन एग्जाम में। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई जी? घूम फिर के आप जो मर्जी कर लो सर, गेम सारा इकोनॉमिक ही आता है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये चीज है नंबर वन। नंबर टू, अब आते हैं सर, व्हाट वर द स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स कॉजिंग डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सर व्हाई डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स एट द एंड ऑफ द डे। So, sir, one of the first drivers of the Soviet Union was that they never provided any outlet of grievances to be brought into the society. When we studied Cold War, I told you one thing, that Russian state psyche was inlet theory. You remember inlet theory? Where we said कि भाई no idea of democracy should penetrate into the society. So close every possible inlet which is there. ठीक है. But sir, let's understand one thing. Your population is bound to have grievances. You need to create mechanisms where people are able to display those grievances. Sir, if people's grievances are accumulated over a period of time and people don't get an outlet to display those grievances, you know, sir, what will happen? The society will collapse. Sir, there are various books today that are written by Americans which say that we don't need to wait for 2049 to see China emerging as a superpower. Before 2049, China will collapse as a state. एक एग्जांपल और देता हूं सर. 2 days back, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu made a statement. Did you read that statement when he said a very important point that the Persian people are more frustrated with the Persian state and the Persian government, which is the Iranian government, is more concerned about suppressing its own people than fighting a war with Israel? ये स्टेटमेंट आया है उसका सर. देखो कितना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट. Tightly gripped society called Iran, no liberty to the people, sir. No grievance redressal mechanism to the people. If people don't get a grievance redressal mechanism, what will happen, sir? One day will come and the people will revolt. You don't need to create anything. Soviet Union collapsed primarily because of this. This is the biggest example in history. Where if you deprive your population grievance redressal mechanism, sir, this is one beauty of India. Indian politicians are very cunning people, sir. Indian politicians from Nehru to Modi are dictators at heart. They are dictators at heart. But they try to manage their dictatorship in this manner that they create mechanisms to allow the population to portray their grievances outside. आप देखो ना, जिसको हम रैप अप करते हैं आज की डेट में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के नाम पे, आरटीआई आ गई देश में. मोदी कहता है मैं लोकपाल ले आया देश में. बेटा ये सब जो है ना, ये आपके मैकेनिज्म्स हैं सोवियत यूनियन टाइप की चीज ना करने के. डेमोक्रेसी इज स्टिल नॉट विद द पीपल. Decentralization is studied more theoretically than it is visible practically in India. आप समझ रहे हो इस चीज को? We are very smart people, sir. We learn from history कि which country failed because of what reason, and we have realized this. A very important thing, that Soviet collapsed because they never provided a grievance redressal outlet. Two examples I am giving you for future to observe, sir. Iran and China. अच्छा आप कहोगे what about Russia, sir, today? Sir, Russia today does not need that. You know why, sir? Because Russia today is a mafia state. Russian government today under Vladimir Putin has created a state where he has given absolute liberty to everybody to do everything which is illegal in nature without any curb on it. That is why the Americans fail to basically tackle Putin today. They cannot tackle him. That is why you see Trump will always make statements which are friendly towards Putin. देखा आपने?
फ्रेंडली टुवर्ड्स पुटिन, बिकॉज ही नोज I cannot manage Putin at all. He has given his liberty to the people to do any illegal activity. सोचो सर, किसी कंट्री में आप जो है माफिया बना के बैठे हो, आप जो है दारू बेच रहे हो, इलीगल आर्म्स रनिंग कर रहे हो, कोई रोक टोक नहीं। आपकी सरकार ही ये चीज करवाने को कह रही है आपको, तो हर आदमी के पास एब्सोल्युटली, मतलब मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा फ्री डेमोक्रेसी कौन सी है? इतनी फ्री तो अमेरिका भी नहीं है। बस यही है कि रशिया इज अमेरिका माइनस रूल ऑफ लॉ। एब्सोल्युटली लिबर्टी है सर, जो मर्जी करो। ये चीज चाइना में नहीं है बेटा। चाइना में जी जिनपिंग का जो कंट्रोल है ना सर, वो यही है। दैट इज वाई सर जी जिनपिंग मस्ट लिसन फ्रॉम हिस्ट्री सर। That history is a testimony to the fact Soviet Union collapsed because of this. If China does not listen, sir, it will collapse. If Iran does not listen, it will collapse. सर ईरान में जो गेम चल रहा है वो बड़ा सिंपल है सर। अयतुल्ला अली खुमैनी को आउटलाइट साइड कर दो, क्योंकि अयतुल्ला अली खुमैनी ने ये पूरा कॉन्सेप्ट बना रखा है, टोटलिटेरियन कंट्रोल। यही चीज आपको पूरी सर पेपर 1 में हैना अरेंड में बताएंगे, जब वो आपको ऑन टोटलिटेरियनिज्म उसकी किताब पढ़ाएंगे। उसने यही बात बोली है ना अरेंट में। वो कहती कहती कि सर नो टोटलिटेरियन रेजिम कैन बी सक्सेसफुल फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, ये उसकी स्टेटमेंट है। बिकॉज टोटलिटेरियन regimes restrict the individuality and the liberty. She says these 2 points, individuality and liberty, because it does not allow the individual the space to grow. Getting my point? She was talking in the context of Nazi Germany. Does not allow the individual the space to grow. और मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया रशिया का। सर रशिया वर्क्स ऑन द थीसिस ऑफ totalitarianism of Hannah Arendt. Russia says individuality is at the center of the growth. Let individual grow, sir. If individual grow, society will grow. अब देखो आप ब्यूटी सर, हैना अरेंट अगर आज जिंदा होती, हैना अरेंट अपनी नस काट लेती, क्योंकि शी वुड हैव नॉट एक्सप्लेन्ड रशिया इन द वे शी वुड वांटेड टू एक्सप्लेन। हर थ्योरी एप्लीकेबल टू ईरान, हर थ्योरी एप्लीकेबल टुडे टू व्हाट इज कॉल्ड एज चाइना, हर थ्योरी नॉट एप्लीकेबल टू रशिया। Individuality is at the center of it. Individually they are growing, society they are also growing. If each individual grows, society grows. They are inseparable. ये पॉइंट समझ आ गया जी? दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर, ड्राइवर ऑफ व्हाट कॉज द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन सर, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू मिलिट्री सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। State diverted all resources that it had, Soviet state, for the purpose of military. They forgot the fact कि sir, while we are preventing people to raise their grievances, we are also not doing anything for their development. सर मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार दिमाग में बैकग्राउंड पे ना इंडिया का स्टेट चलाते रहो, क्योंकि इंडिया वही कर रहा है। देखो, हल्की फुल्की डेवलपमेंट कर दो, एक पुल बना दो, हाईवे बना दो, नई ट्रेन लॉन्च कर दो, वो अलग बात है कि स्टेशनों पे रील बन रही है। कुछ भी कर दो, थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट करते रहो, आदमी बिजी रहता है। और बैकग्राउंड में क्या करते रहो साथ साथ सर? बैकग्राउंड में जो है टोटलिटेरियनिज्म। मैं कह रहा हूँ कि सर इंडियन डेमोक्रेसी पर रिसर्च होनी चाहिए, दैट इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी वी आर अ ब्लेंड ऑफ टोटलिटेरियनिज्म विद सिविल डेमोक्रेसी। सिविल डेमोक्रेसी पढ़ाएंगे आपको पूरी सर। सिविल डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि सिविलियंस को लेके कुछ ऐसे लॉज लाओ जो कि सिविलियंस को ये लगे कि ये लॉज हमारे लिए। केस इन पॉइंट आरटीआई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आयुष्मान भारत स्कीम, आपके लिए आपके लिए आपके लिए। अरे हमारे लिए क्या है? इंश्योरेंस कोई प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस क्लेम किसी और से होनी है, हमें तो सिर्फ फायदा मिलेगा, और वो भी तब जब आप मर जाएंगे। तो तू तो मारना चाहता है हमें? ये क्या मतलब हुआ सर? लेकिन नरेटिव समझो सर, सिविल डेमोक्रेसी आपके लिए। पीएम किसान निधि, 6,000 रुपया साल का मिलेगा किसान को सर। बहुत अच्छी बात है, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। किसान 6,000 रुपया लेके क्या करेगा सर? आप कह रहे हो कि किसान जो है जाके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदेगा, फायदा किसको हुआ? बिजनेसमैन को, हमको। उसका धंधा चल रहा है ना सर। आप तो कैश हाथ में दे रहे हो कि जाके उससे सामान खरीद ले। फर्क देख रहे हो आप सर? सिविल डेमोक्रेसी, ये चीज रशिया में नहीं थी सर। सोवियत यूनियन ना सर नेवर डिड ऑल दिस। सोवियत शुड हैव अंडरस्टूड फ्रॉम अस। उस समय जो उनके लीडर थे ना, उनको हमसे सीखना था ये सब।
माइकल गॉर्बेचेव जो थे उनको सीखना था हमसे, उस समय जो बाकी निकिता क्रूशेव उसको सीखना था हमसे, उसको स्टार्ट करनी थी निकिता क्रूशेव। अनधन योजना, गरीबों में अन्न बांट दो। सोवियत को लाइन में लगा रखा है लोगों को, बोरी बोरी राशन मिल लिया है। सर ये सब अगर वो करते ना, मैं आपको बता रहा हूँ सोवियत कोलैप्स ना करता। तो दोनों ड्राइवर समझ आ गए जी। अब आते हैं पॉइंट पे सर, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल रिलेशन। Sir, first point of the collapse of the Soviet Union on the international relations is that America created the narrative of triumph of capitalism. But America very clearly realized that they cannot use the word capitalism at the international level. So what did they do? They tried to wrap the idea of capitalism in this manner that it does not appear as a victory of capitalism, but it is the victory of capitalism. They tried to create a concept where it does not appear that it is the victory of capitalism, yet they wanted to show that it is the victory of capitalism. How did they do that? They invented a word called liberalism. लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, ये थ्री वर्ड्स का ध्यान रखना, न्यूज़पेपर में आएंगे, आते भी हैं, पढ़े भी होंगे आपने। लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, लिबरलिज्म, दैट्स अ ब्यूटी सर। दे सेड कि सर लिबरलिज्म हियर मींस अ सिनेरियो वेयर देयर इज अ विक्ट्री ऑफ man over suppression. Why did they use this analogy, man over suppression? Because if you remember, I told you during the Cold War, the Americans were the ones who created a narrative of equating communism with that of a disease. You remember that? Equating communism with a disease. So, victory of man over suppression. Victory of man over suppression. हम समझ रहे हो? So, triumph of liberalism. First consequence. Second important consequence, sir, triumph of democracy. सबसेट है ये तो। ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी कैसे सबसेट है सर? भाई डेमोक्रेसी होगी तो लिबरलिज्म होगा, और सोवियत में डेमोक्रेसी नहीं थी, इसलिए देखो वो कोलैप्स कर गया। सो नैरेटिव मींस any country that ought to be successful after dissolution of Soviet Union must deepen democracy. वर्ड याद रखो सर, deepen democracy। किताबें लिखी गई हैं इस पे, डीपनिंग डेमोक्रेसी। ऐसे आते हैं लिखे हुए न्यूज़पेपरों में हर हफ्ते कम से कम, या महीने में एक दो बार तो हिंदू में आता ही आता है, डीपनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया सर, डीपनिंग डेमोक्रेसी। Sir, democracy can only be deepened the Gandhian way, and that way is giving power directly to the people and dismantling the state above. वो होना नहीं। और सर सबसे बड़ी बात देखो सर, ऑल दोज पीपल टुडे हु टॉक अबाउट डीपनिंग डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी पेपर वन में पढ़ोगे पूरी सर के साथ, वो बताएंगे कि किस तरीके से डीपनिंग डेमोक्रेसी में सारे लोग ये कहते हैं कि स्टेट मस्ट डिस्ट्रीब्यूट डेमोक्रेसी। सर हाउ कैन स्टेट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट डेमोक्रेसी व्हेन डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल? सच अ बिग डाइकोटमी सर, सोच में देखो सर, ये होती है फिलोसॉफिकल डाइकोटमी। डेमोक्रेसी इज विद द पीपल, डेमोक्रेसी में सारा टाइम आपको क्या सुनाते हैं? यू आर पावरफुल, यू आर पावरफुल, डेमोक्रेसी इज विद यू, यू आर द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, यू आर द फेस ऑफ डेमोक्रेसी। देन सर व्हाई विल स्टेट डिसाइड हाउ विल आई एक्सरसाइज माय डेमोक्रेसी? On what rationale has the state decided today that when I am 18-year-old, I am eligible to vote? On what rationale? कोई साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे? 18 साल की आयु के बाद आप वोट करोगे और 21 साल के बाद आप जो है सेवन करोगे। 13 साल का लड़का सेवन कर रहा है, 14 साल का लड़का जो है स्टार्टअप बना के बैठा हुआ है। क्या वो अकलमंद नहीं है? वो अलग बात है कि 15 साल का लड़का जो है वो निब्बा निब्बी भी कर रहा है, और 16 साल का लड़का जो है रीलें भी बना रहा है। सोसाइटी में डाइवर्सिटी तो होगी होगी। तो हम डाइवर्सिटी पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं इस पॉइंट पे कि सर इज देयर एनी साइंटिफिक रैशनल बिहाइंड द लॉजिक ऑफ 18 years? देयर इज नो लॉजिक सर। बट द क्वेश्चन इज कि सर स्टेट हैज डिसाइडेड दैट यू विल बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज योर डेमोक्रेसी when you breach the threshold that we have decided, then how is it called democracy, sir? Then how is it called democracy?
है कोई आंसर? है ही नहीं। इस चीज को समझो सर। अमेरिका's narrative is the systematic impact of dissolution of the Soviet Union is a triumph of liberalism, number one. Number two, triumph of democracy. And today, any country, America says, can only prosper after the collapse of the Soviet Union only if it is a liberal democracy. ये दो शब्दों का फ्यूजन होता है। आर्टिकल्स में ध्यान से पढ़ा करो। लिबरल डेमोक्रेसी अमेरिका बताएगी सर। उस कंट्री में जहां पर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट दूसरे को अक्यूज कर रहा है कि वो डिक्टेटर है। कमला बार बार अपने कैंपेन में बोलती थी ट्रम्प डिक्टेटर है। भाई पहले अपने घर के मसले तो सुलझा लो। घर में चाची लड़ रही है चाचा से, लेकिन दादाजी बाहर आके ज्ञान बांट रहे हैं कि समाज में सबको एक रहना चाहिए। भाई साहब चाची रात को चाचा दादाजी कंच काट लेगी, जैसी बातें कर रहे हो आप। लेकिन दिक्कत समझ नहीं आ रही सर। तो यहां पर चीज को समझो सर। अमेरिकन्स हैव ट्राइड टू पोर्ट्रे दैट एनी कंट्री आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन द इंटरनेशनल सिस्टम कैन बी सक्सेसफुल ओनली एंड ओनली if it follows the path of liberal democracy. So is this larger idea clear now? चलो आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट वर द जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन सर? फर्स्ट जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज सर, इमर्जेंस ऑफ सेंट्रल एशिया एज अ बफर। इमर्जेंस ऑफ सेंट्रल एशिया एज अ बफर। और मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बेटा दिस टेरिटरी कॉल्ड सेंट्रल एशिया विच इमर्ज्ड एज अ बफर इमर्ज्ड इन दिस मैनर दैट इट बिकेम दैट स्पेस टू काउंटर रशिया। बिकेम दैट स्पेस टू काउंटर रशिया। क्यों? क्योंकि सर दिस एरिया गॉट लिबरेटेड फ्रॉम द सोवियत यूनियन, wanted to remain independent of the Soviet Union. America wanted to impose liberal democracy here. How did America try to impose liberal democratic order in the Central Asian sir? Through color revolutions. ये पॉइंट याद रखना सर, कलर रेवोल्यूशन। अमेरिका का एक फेवरेट कॉन्सेप्ट है सर, रिजीम चेंज करने से पहले ना वो कलर रेवोल्यूशन लाता है। फॉर एग्जाम्पल इन किर्गिस्तान, देर इज अ कंट्री कॉल्ड किर्गिस्तान इन सेंट्रल एशिया। बेटा वहां पे अमेरिका ट्राई टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज ट्यूलिप रेवोल्यूशन। व्हाट इज ट्यूलिप रेवोल्यूशन सर? An attempt to bring about a regime change in Kyrgyzstan so that there is a liberal democratic order in Kyrgyzstan. And with that liberal democratic order in Kyrgyzstan, America would have succeededly created a narrative that sir, Central Asia can only be successful if it follows liberal democracy. But the problem is what sir, when Kyrgyzstan tulip revolution happened, the Russians immediately stepped in and they rejected that. अच्छा दूसरा क्या, एक और एग्जांपल है पता है? यूक्रेन सर, ऑरेंज रेवोल्यूशन। You must have heard the term called Orange Revolution in the reference of Ukraine, sir. Orange Revolution, another color revolution done by the Americans with the larger objective of promoting liberal democracy in Ukraine. But what did Russia do, sir? Russia responded by bringing up a dictator there. Every time Russia will bring up a dictator there. आपको जब ट्रम्प की विक्ट्री हुई ना सर, उसके बाद जेलेंस्की की शक्ल देखनी थी। जेलेंस्की की शक्ल उस समय उस शाम वैसी थी जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शक्ल थी जिस दिन हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट आया था। कपड़े सिलवा के बैठा था कि मैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहा हूँ, नंगा हो गया। देखो ऐसे पैरों तले जमीन निकलती है। जेलेंस्की की इस समय हालत खराब है। पता ही नहीं कि ट्रम्प क्या करेगा। पैसा तो देगा नहीं, जो लगा हुआ है वो वापस ले लेगा। बल्कि अब उसको समस्या ये है कि ये ना हो कि जितना पैसा इन्वेस्ट हो गया कहीं उसका भी रिटर्न मांग ले। और वो रिटर्न तो तभी होगा जब रसिया कहेगा तेरी टेरिटरी मैं लूंगा। पहले टेरिटरी के नाम पे पैसा ले लियो, उसको दे दी। आप चीज को समझो सर। Not only Zelensky is going to be affected, sir. Every country that stood behind him, specifically in Western Europe, specifically in Central and Eastern Europe, all of them are going to pay a heavy price, sir. All of them. Color revolutions.
अच्छा, इसके बाद दूसरा इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ सर? दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि सर सर्टन टेरिटरीज हैव नाउ इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड ऑर्डर विच आर जियोपॉलिटिकली वेरी सिग्निफिकेंट सर। कौन सी टेरिटरीज हैं भाई? फॉर एग्जांपल ईरान, मैंने आपको अभी बताया, a geopolitically important territory sir, because not only it possesses a resource but more importantly sir, today Iran connects to Eurasia, which is a big landmass, landlocked landmass, and also has access to warm water ports. So conflict in the Middle East is going to revolve around Iran always, because nobody wants Iran today to become powerful, because they know that if Iran becomes powerful, मैंने आपको larger picture बता दी सर, ईरान यूरेशिया, रशिया यूरेशिया, ईरान रशिया यूरेशिया, यूक्रेन, वेस्टर्न यूरोप, पिक्चर क्लियर रखनी है सर दिमाग में। ईरान के ऊपर यूरेशिया, रशिया के नीचे यूरेशिया, ईरान स्टेबल मींस ईरान यूरेशिया, रशिया स्टेबल मींस रशिया यूरेशिया, ट्रंप वॉकिंग आउट ऑफ यूक्रेन मींस रशिया इन यूक्रेन वाया यूरेशिया, ईरान टू वेस्टर्न यूरोप वाया रशिया एंड यूक्रेन वाया यूरेशिया एंड यूक्रेन। तो लार्जर लैंड मास जो है पूरा का पूरा, और ये ट्रंप के टाइम पे होने वाला है सर, क्योंकि ट्रंप जो है ना वो व्यक्ति ऐसा है कि भाई हम अपने काम से काम रखेंगे साहब, अमेरिका विल माइंड इट्स ओन बिजनेस, ये उसकी फिलोसफी है। अगर एक लाइन में बोलें कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी, वी विल माइंड आवर ओन बिजनेस, इंडिया विल से पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम, ट्रंप विल से यू गो एंड मैनेज देम योर वे। हमारे लिए अच्छा है सर, वी गेट मोर स्पेस। इनफैक्ट ये पॉइंट याद रखना आप, इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर ट्रंप इज गोइंग टू बी बेटर सर, बिकॉज ट्रंप इज गोइंग टू रिट्रीट फ्रॉम एवरीवेयर। ही विल रिट्रीट फ्रॉम यूरोप, ही विल से यूरोप में मेरे को नहीं लेना, वहां पे मेरे को कोई लेन देन नहीं है, तो इंडिया विल गेट मोर स्पेस इन यूरोप, तभी तो हम खुश हैं, मोर स्पेस इन यूरोप। Provided we have a strategy for Europe, we don't really have that strategy for Europe today, because there are a lot of areas where India and Europe don't sync with each other. Europeans don't actually like India. That's the basic problem. Fundamental issue is कि वो उनसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये अर्स्टवाइल हमारी कॉलोनी जो है अब ये हमारे बगल में बैठ के हमारे से व्यापार कैसे कर रही है, उनको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और चाइना उनकी क्योंकि कभी कॉलोनी थी नहीं, और चाइना ने आज की डेट में ग्रोथ कर ली, और चाइना जाके बिजनेस करती है, तो उनको लगता है कि नहीं यार, चाइना इज अ कंट्री दैट हैज स्ट्रगल्ड टू राइज लाइक वी हैव डन। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द वे यूरोपियंस लुक एट चाइना वर्सेस इंडिया। इसीलिए आप देखो कि बहुत सारी कंट्रीज यूरोप की जो है बीआरआई को खरीद लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये तो अलग बात है कि हमारे भैया थे इस बार, उन्होंने जहाँ मेलोनी भाभी को बोल दिया, भाभी देख लो, औरत हमेशा अपने पसंदीदा पसंदीदा मर्द की ही बात सुनती है बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही हमने भाभी को बताया ना, मेलोनी भाभी ने मना कर दिया, इटली ज्वाइन नहीं करेगा बीआरआई। भैया नाराज हो गए, योगी जी से फोन कराया था, बुलडोजर भेज देंगे भाभी, बता रहे हैं आपके, इटली में सारे पिज्जा वीजा पास्ता सब दबा दूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ समोसा और जलेबी और साथ में जो वो है क्या कहते हैं गुजिया, वो चलेगी हर जगह बस। गुजिया अपेरेंटली सर, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ एक बार जब मैं यूपी गया कि गुजिया वहां पर पूरा साल खाते हैं, चाय की दुकानों में गुजिया पड़ी होती है। गुजिया जनरली अ स्वीट विच वी ईट ड्यूरिंग दी होली टाइम। क्योंकि मैं गया था आयरोनिकली दिवाली टाइम पे, मैं कहा गुजिया दिवाली पे भी चल रही है यहाँ पे यार ये तो। फिर मेरे को चाय वाले ने बताया नहीं जी हमारे यहाँ पूरा साल चलती है, तो अच्छी चीज है सर। वहाँ भैया ने धमका दिया था, छोटे हैं भैया लेकिन तेज हैं बहुत, यूपी वाले। भाभी को बोल दे, भाभी बुलडोजर आएगा सीधा, यहीं से चलाते हुए भेजेंगे, और दारा सिंह बैठा होगा उस पे, मंत्री यूपी, और एक जाएगा केशव प्रसाद मौर्य लेके। वो अलग बात है कि उसका वीजा ही रिजेक्ट कर देंगी भाभी, देख के डर जाएंगी। तो ये चीज याद रखना सर। वन थिंग इज वेरी क्लियर, geopolitically significant territories have emerged, and these territories have become the new theaters of conflict, be it Iran at one place, be it Ukraine at the other place, be it Afghanistan at the other place। आपने एक कंट्री और देखी होगी सर जो आज की डेट में जियोपॉलिटिकली बहुत हाथ पांव मार रही है इधर उधर, एंड दैट कंट्री इज कॉल्ड टर्की। टर्की को सडनली आपने देखा होगा कि सर उसका व्यवहार बदल गया। टर्की डजंट लाइक इंडिया सर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दे ओनली वांट टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया, नथिंग एल्स।
because they know that we will loot those tourists. That is the first thing. Second thing is, sir, ki the reason why Turkey doesn't like India is because Turks have this misconceived notion that at one point of time during the medieval era we ruled over India. So their psyche is very similar to the Europeans. Ki how can India today, a country which we ruled at one point of time, today sit with us and do business with us? Ego, sir, like the European ego. अच्छा, टर्की टुडे इज अ मेंबर ऑफ नाटो आल्सो. टर्किश क्राइसिस पढ़ाया था आपको मैंने, ग्रीक क्राइसिस, टर्किश क्राइसिस. हमने कहा था कि टर्की बिकेम अ मेंबर ऑफ नाटो आल्सो. द ब्यूटी इज की सर, टर्की आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ नाटो हैज रियलाइज दैट by being in NATO there is no point being in NATO. Why? Because sir, one reason why Turkey joined NATO was that in the long run they thought they'll become a part of the Eurozone or the European Union. But sir, the problem is European Union refused to accept them. अच्छा, अब question is, why did European Union, or why does European Union even today does not accept Turkey as a member of EU? They don't accept Turkey as a member of EU today for a very simple reason, sir, because they believe that Turks are a part of the Ottoman Empire. We defeated them. And because we defeated them, decimated them, how can these Turks today come into that exclusive club called the Eurozone, which is only reserved for the erstwhile big people? आपको अब मैं एक पॉइंट वो बोलने जा रहा हूँ सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. वन कॉमन फीचर दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड टुडे इज countries have a lot of ego. If EU has an ego with India, they don't have the same ego with respect to China. Turkey has an ego with India, same way European Union has an ego with Turkey. So try and understand, sir. A very important feature of the global politics today is that countries are basically doing foreign policies which are more egocentric. And sir, the demerit of doing foreign policy through egocentric approach is that your national interests never flourish. In national interest, sir, ego cannot come, sir. In national interest, your national interest comes. हम समझ रहे हो इस चीज को? तो ये एक अनोखा फीचर है सर. और लास्ट फीचर जो निकला है वो ये है सर कि there is a clash between America and China over future global dominance. Over future global dominance. China is trying to do everything possible to ensure कि sir it replaces the American hegemony. And America is doing everything possible to ensure that China does not displace its own hegemony. नहीं बेटा, ये नहीं कह सकते हिस्ट्री सेंटर, क्योंकि हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन तो कोई कर ही नहीं रहा ना. सब सिर्फ हिस्ट्री में अपने ईगो को यूज कर रहे हैं. भाई अगर ईगो को यूज करना है तो फिर हम भी कर सकते हैं अखंड भारत कह के. पर हम वो करते नहीं ना फिर, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अखंड भारत बोलेंगे भी तो उसको सुनेगा कौन? भाई कोई बायर भी तो होना चाहिए ना आपके आइडिया को लेके यार. हमारे पास कोई बायर ही नहीं है. हर बंदे से तो हमारी अनमन हो रखी है. नेपाल में नहीं चल रही, पाकिस्तान सुनता नहीं, बांग्लादेश में हसीना थी, हसीना को मना के यहाँ ले आए, यहाँ बैठी है भाभी. म्यांमार में अलग ही खेल चल रहा है, भूटान कह रहा है तुम हमसे दूर रहो. मालदीव वाला आ गया कि भैया टूरिस्ट भेज दो, हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, चाइनीज टूरिस्ट आ नहीं रहे, उनकी इकोनॉमी ठप है. हमने कहा चलो लड़के भेज देंगे हनीमून वाले, वो यहाँ तक चूड़ा पहन के भाभी जी चली जाएंगी, बाल खोल के बीचों पे चल रही है, पूरा पोछा लगा रही, बीच साफ हो रहा है. तो इशू ये है सर कि अपन की चल कहाँ रही है, आप ये सोचो. तो बायर भी होना चाहिए हमारी हिस्ट्री को लेके अखंड भारत. 2014 में ये बात बोलते थे तब लोग कहते भी थे कि हाँ चलो आ जाएंगे लोग, आ जाएंगे आ जाएंगे. अब सबको पता चल गया 10 साल में कोई नहीं आने वाला. तो ये चीज है सर. ये क्लियर हो गया जी? एनी डाउट क्लियर? अब आते हैं जी कुछ स्कॉलर्स पे. पहला स्कॉलर है बेटा जिसका नाम है जॉन मैकिंदर. मैकिंदर, MACKINDER. जॉन मैकिंदर बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है सर. जॉन मैकिंदर जो कहता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो कहता है एनी कंट्री दैट कंट्रोल्स सेंट्रल एशिया कंट्रोल्स द वर्ल्ड.
Any country that controls Central Asia controls the world. उसका लॉजिक ये है सर कि सेंट्रल एशिया इज द हार्ट ऑफ यूरोप, हार्ट ऑफ एशिया, हार्ट ऑफ नॉट जस्ट Central Asia, but it is the heart of Europe also and heart of Asia also. So Mackinder says कि सर Central Asia is the gateway to Asia Europe both. बात भी सही है सर. सेंट्रल एशिया में खड़े होकर राइट मुड़ जाओ एशिया आ गया, लेफ्ट मुड़ जाओ यूरोप आ गया. तो सर एनी कंट्री दैट डोमिनेट्स सेंट्रल एशिया dominates the world because it dominates both the parts of the world, that is Europe and Asia. अच्छा सर, Mackinder's theory helps us to understand that why did America do tulip revolution in Kyrgyzstan? They wanted to do liberal democracy there. Mackinder's theory helps us to understand that why did Russia intervene on behalf of Kyrgyzstan to undo the tulip revolution, to prevent the Americans the space to promote a liberal democracy so that they could not control. Now, sir, the question is, what is the status of Central Asia today? It's not wrong to assert that Central Asia status today is very clear. Sir, Central Asia today is nothing but a strategic lake of Russia. This is how we look at it. Strategic lake. लेक बोले तालाब, जहां पे पैडल बोट चलती है, डक वाली. स्ट्रेटेजिक लेक. ये चीज समझ आई? कंट्रोल कोई नहीं कर पा रहा. रशिया का भी दबदबा उतना नहीं है सेंट्रल एशिया में जितना एक टाइम पे था जब वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था. अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल नहीं है वहां पे. मतलब ये नहीं कहेंगे कि है ही नहीं सर, है. उनका दबदबा बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, पर स्ट्रेटेजिकली एज जो है वो रशिया को है. इसी रीजन से अब आप एक पॉइंट समझोगे अगर मैं बोलूं, एक लॉन्ग रन का पॉइंट, कि दिस इज द रीजन व्हाई यू सी रशिया फेवर्स मोर चाइना थ्रू एससीओ इन सेंट्रल एशिया देन अमेरिका इन सेंट्रल एशिया. डू यू गेट दिस पॉइंट नाउ? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. कल को एससीओ के ऊपर आंसर लिखो तो ये पॉइंट डालना वहां पे, मैकिंदर की थ्योरी, कि रशिया विल ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ चाइना and SCO in Central Asia because at least more SCO, more China in Central Asia keeps the Americans away. And giving China and SCO the space to come in Central Asia also gives Russia the leverage to control Central Asia and thereby keep it its strategic link. तो दोनों आइडिया क्लियर हो गए आपको? ऑप्शनल है सर. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर अगर ध्यान से सुन रहे हो, जैसे आप लोग कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हो, तो चीजें क्लियर भी हो जाती है. और आप देखो कि सोच में कितना बदलाव भी आता है फिर आपके. अब आपका नजरिया एससीओ को देखने का बदल गया पर परमानेंटली फॉर एवर. आप समझ रहे हो? और एक पॉइंट अब आपको और मैं बोलूंगा तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा. रशिया डिलिबरेटली ब्रॉट इंडिया इनटू सेंट्रल एशिया इनटू द एससीओ टू कीप द यूएसए अवे फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड एससीओ. हाउ? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? रशिया ब्रॉट इंडिया इनटू सेंट्रल एशिया एंड एससीओ टू कीप द अमेरिकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड एससीओ. हाउ? Because sir, Russia knows one thing. It is way better to bring India today, which is also a good engaging partner of US, than bringing US, because Russia and India have had a very deep historical relationship. And India will be more sensitive to the Russian interests in Central Asia of keeping America away. It will be more sensitive to the Russian interest. And that is why, sir, Russia has always displayed more interest in the Kashmir issue with India today. हमारा एक टॉपिक है इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर सिलेबस में, उसमें इंडिया रशिया रिलेशन है नहीं वहां पे. आपको ये चीज तब और समझ आएगी कि रशियाज अलाइनमेंट विद इंडिया ऑन द कश्मीर इशू हैज ऑलवेज बीन बिकॉज ऑफ रशिया अंडरस्टैंडिंग आवर सेंसिटिविटी ओवर द कश्मीर इशू. बट इन रेसिप्रोकेशन ऑफ दैट, इंडिया हैज ऑलवेज ऑल्सो प्रेफर्ड to develop a deeper tie with Central Asia, deeper tie with the SCO, because doing that gives comfort to Russia that it is better to have India in Central Asia and SCO than to have America. And America gets fake comfort by this idea that India, which is its partner, is in Central Asia and SCO, therefore will give us information about Central Asia and SCO. India does not do anything.
इसी रीजन से आप देखो कि इंडिया बार बार ग्लोबल लेवल पे एक नैरेटिव यही चलाता रहता है कि हम गए एससीओ में, हमने अपना पॉइंट बोला, लेकिन एससीओ में कुछ हो नहीं रहा। हम अंदर की बात बताना ही नहीं चाहते वो क्या रहा है। आपने देखा कभी इंडिया ने आके बोला हो कि एससीओ में मास्टर स्ट्रोक हो गया? कभी नहीं बोलते ये। हम कहते हैं कि वी हैव पुट आवर पॉइंट, पाकिस्तान इज एन इरिटेंट। आप समझ रहे हो गेम को? बार बार ऐसी बातें करते रहो ताकि अमेरिकन को लगे कि एससीओ में कुछ चल नहीं रहा। पर सर एससीओ के पीछे जो गेम है वो सिंपल है सर। चाइना को आने दो सेंट्रल एशिया में ताकि अमेरिका ना आए बस। चाइना ठीक है, अमेरिका नहीं ठीक है। एक सरप्राइजिंग बात है सर, कभी व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी पढ़नी हो तो वो पढ़ना आप कभी। निकाल के दिखाऊंगा आपको किताब। उस किताब में उसने खुद लिखा है कि आई वॉज द चैंपियन ऑफ द आइडिया ऑफ एससीओ। आई टोल्ड चाइना क्रिएट एससीओ। चाइना नेवर केम आउट विद द आइडिया ऑफ एससीओ। इट वॉज रशिया हु proposed the idea of SCO, because Russians knew that after the demise of the Soviet Union, the Americans will try to control the Central Asia region. It is the Russians who compelled the Chinese solve your border issues with them so that you have a deeper relationship in this area. Thereby, it acts as a buffer against the Americans who are there. बहुत बड़ी चीज है सर ये। व्लादिमीर पुतिन की खुद की बायोग्राफी में ये पॉइंट लिखा हुआ। समझ में आई जी? अगला स्कॉलर है जी सर, उसका नाम है क्रिस्टीन गोडसे। इनका नथुराम गोडसे से कोई नेता नाना नाना नहीं है जी। क्रिस्टीन गोडसे जो है, ना ही ये महाराष्ट्र नागपुर के आसपास कहीं पाए जाते हैं। इन्होंने ये लिखा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर पोस्ट सोवियत स्टेट्स कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम अ रेड हैंगओवर। रेड हैंगओवर सर, रेड लेबल पी लिए उन्होंने, उनको रेड हैंगओवर हो रहा है। रेड हैंगओवर का मतलब ये है कि सर दोज पोस्ट सोवियत स्टेट्स आर नॉट एबल टू क्लियरली डिफाइन व्हाट डू दे वांट टू डू इन द फ्यूचर। He says कि those post-Soviet states which were earlier part of the Soviet Union, they do not know what do they really want. Do they want to remain independent? Do they want to remain under Soviet control? Do they want to embrace America? There is no clarity. और वो ये कहता है कि because they don't have the clarity, they are easily malleable. Anybody can control them. Sometimes America tries to do so, sometimes Russia tries to do so, sometimes Central Asians are controlled by the Chinese also. Or the post-Soviet territories are controlled by either of them. So they need to come out of the red hangover. कि they are no more part of the Soviets. Create your own independent identity. आप समझ रहे हो? ये पॉइंट लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्लास में। क्योंकि जब आप शादी करने जाओ या कोई लड़का ढूंढो तो लड़का ये ना बोले आपको आके हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, मेरे पापा की 4 दुकानें, तेरा क्या है? तूने क्या मेहनत करके कमाया ये बता पहले। नहीं, मेरे पापा ने मेरे को बिजनेस डाल के दिया, तो पापा का बिजनेस है, तेरा क्या है? कुछ नहीं है। पहली फुर्सत से निकल, भगा देने का उसको। यहां पर आता है तीसरा सर, स्टीवन रॉसफील्ड। स्टीवन रॉसफील्ड, ROSFIELD, स्टीवन रॉसफील्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला इसने सर। इसने कहा है कि सर जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, वॉशिंगटन कंसेंसस बेसिकली क्रिएटेड अ शॉक थेरेपी फॉर मेनी कंट्रीज। That is why countries today find it better to engage with China than to engage with USA. Find it better to engage with China than to engage with USA. देखो अभी आपको मैंने बताया ना सर, वॉशिंगटन कंसेंसस को पढ़ते समय हमने क्या बोला बेटा? हमने ये कहा कि बेटा जो वॉशिंगटन कंसेंसस है वो क्या है? वॉशिंगटन कंसेंसस इज अ टूल यूज्ड बाय द अमेरिकन्स थ्रू द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF टू परपेचुएट द अमेरिकन इकोनॉमिक हेजेमनी। ये है वॉशिंगटन कंसेंसस सर। व्हेन this consensus was imposed upon countries, it created shocks. Sir, many countries, specifically the countries which were communist, could not digest capitalism.
And in many countries, capitalism failed. Case in point, there are many African countries where, after the end of the Cold War, when they wanted to shift away from communism and when they embraced capitalism, they failed. And America did not shy away in bringing dictators there. And through that dictatorial attitude, they tried to promote the idea that dictator can control the country better. देखो सर, any country which is a truly democratic country can never effectively deal with a dictator. America, being a country which says that we are mother of all global democracy, today is a country that favors to engage with every dictator on earth possible. In fact, America is a country that has created so many dictators also, proving the fact that the democracy of America is a facade. And because America has propped up dictators, and those dictators in many cases have emerged after failure of Washington consensus. So one thing is very clear now, कि countries have developed affinity towards China because China never came out with this kind of a Washington consensus. समझ में आया जी? अब आगे बढ़ते हैं सर. अगला टर्म है स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस. सर, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस is a conceptual idea which means that a country has some exclusive leverage over your political, economic, and cultural aspects. It's a conceptual notion. मतलब it's a concept where one country believes, feels that that country has a leverage over political, economic, and cultural aspects of society of the other. Acha sir, why do we say that it is a conceptual notion? Because it is not colonialism, sir. In colonialism, you have direct control. Here we are using the word leverage. Leverage means that you have a perceptual feel that you can control them. केस इन पॉइंट बेटा, अभी मैंने आपको बताया ना, एक टर्म यूज किया, स्ट्रेटेजिक लेक. रशिया बिलीव्स दैट सेंट्रल एशिया इज इट्स स्ट्रेटेजिक लेक सर. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सर रशिया लुक्स एट सेंट्रल एशिया थ्रू स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस. रशिया फील्स दैट सेंट्रल एशिया इज माय स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अब आपको ये टर्म क्लियर हुआ? और आपको अब ये टर्म और क्लियर होगा जब मैं एक पॉइंट और बोलूंगा कि इंडिया फील्स इंडियन ओशन इज इट्स स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस. हमें लगता है कि भाई इंडियन ओशन में जितनी भी कंट्रीज हैं, जहां पर दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जिसमें एक श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है, बाकी तो फिर वो अफ्रीका पहुंच गए, इतनी दूर तो हमें जाना नहीं. हमें लगता है कि ये दो तो हमारे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है सर. इनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमी, कल्चर जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. आपको समझ आया जी? अच्छा, अब आते हैं कि सर ये क्वेश्चन पे कि सर हाउ डज प्रेजेंट रशिया सी द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इट्स व्यू ऑफ न्यू सोवियत स्ट्रेटेजिक स्पेस. इसके साथ आइडिया आता है कि इज देयर थीसिस ऑफ आइरिडेंटिज्म एट वर्क टुडे इन न्यू सोवियत स्पेस. Illustrate with examples of irredentism and analyze the strategic outplay in the post-Soviet space through the use of scholars. So, sir, the most important scholar that we are going to use is Rebecca Koffler. Rebecca, Rebekah, Rebecca Koffler, Kofler. Sir, Rebecca Koffler is of the opinion that the post-Soviet space is viewed by Russia and Putin today through the prism of Eurasianism. Eurasianism. She uses a word called Eurasianism, where she says that Eurasianism is a concept which inspires Vladimir Putin
and is a concept which says that all countries which were number one part of the Soviet Union should also continue to be a part of modern day Russia. So, sir, Eurasianism is a conceptual notion in the mind of Putin. And Rebecca says that it is through this conceptual notion of Eurasianism that Vladimir Putin is able to exercise and leverage sphere of influence over erstwhile Soviet territories. पहला तो ये पॉइंट है. अब दूसरा पॉइंट शी सेज इज दैट देयर इज अ थीसिस ऑफ irredentism at work today. What is the meaning of the word irredentism, sir? Irredentism is a concept which Rebecca says means that Putin today believes that all countries that have ethnic Russians are nothing but territories which are part of the historical Soviet Union, अखंड सोवियत यूनियन. मैं कह रहा हूं पुतिन की और मोदी की बनती क्यों है? अखंड भारत, अखंड रशिया. Irredentism, sir, means all those countries where there are ethnic Russians who are living. All these countries with ethnic Russians must be a part of the Soviet Union, is what he says. देखो सर, अब try to join the two concepts, बेटा. Rebecca's concept number one is Eurasianism. Rebecca's concept number two is irredentism. Eurasianism and irredentism will give us a lot of historical examples. First example is basically what? Ukraine. What is at play in Ukraine is irredentism and Eurasianism. An attempt by Putin that Ukraine historically was a part of Soviet Union, therefore must be a part of Soviet Union. Ukraine has a lot of ethnic Russian community, therefore must be a part of the Soviet Union. Irredentism and Eurasianism. Second example, Crimea. Annexation of the Crimea region by Putin in the recent times is a classic example of how Putin's idea of Eurasianism, irredentism is at work today. Third is Georgia. Another territory where Putin tries to exert the same amount of control. So Rebecca is of the view, sir, that Putin's behavior is guided by the philosophy of irredentism, Eurasianism, and wherever he will try to assert sphere of influence, he will not use the word sphere of influence, but he will use the word Eurasianism. And he will justify Eurasianism through the irredentism. ये क्लियर हो गया जी क्वेश्चन आपको सबको? ये तभी क्लियर होता बेटा अगर आपको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पता होता पहले. बिकॉज पुटिन डज नॉट यूज द वर्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. वो ये शब्द ही नहीं यूज करता ना. उसने अपना इन्वेंट कर लिया यूरेशियनिज्म, उसको यूज करता है वो. और बेटा आपको भी जब आप आंसर लिखोगे पॉल साइंस का, आपको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं लिखना, वो जीएस का छोकरा लिखेगा. आप लिखोगे यूरेशियनिज्म यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, आइरिडेंटिज्म, रिबेका कॉफलर. समझ में आई थी? अब आते हैं स्कॉलर पे. अगला स्कॉलर जो है और कोई नहीं, वो है भाई व्लादिमीर पुतिन. नाम स्कॉलर का है व्लादिमीर पुतिन सर. वही रसिया वाला लड़का है अपना. स्कॉलर आदमी है क्योंकि उसने कई जगह पर किताबों में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है. उसने ये कहा है, नंबर वन, रशिया विल डू एवरीथिंग टू यूनाइट एथनिक रशियंस.
ये स्टेटमेंट बड़ी प्रॉब्लमेटिक है सर. रशिया विल डू एवरीथिंग टू यूनाइट एथनिक रशियंस. एवरीथिंग बड़ा डेंजरस शब्द है. कई लोग कहते हैं कि दिस वर्ड एवरीथिंग इंप्लाइज दैट व्हाई रशिया इज क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, जॉर्जिया, क्राइमिया. बीच में उसने क्रिएट किए थे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, मोल्डोवा में एटसेट्रा. अगला स्कॉलर सेकंड, फिर से पुटिन, बट हिज अनदर व्यू पॉइंट सर. एंड दिस पॉइंट इज सर वेरी वेरी डेंजरस सर. ही सेज इन हिज बुक, रशिया डज नॉट हैव अ बॉर्डर एनीवेयर इन यूरोप. इट टचेज वाटर टू वाटर. भाई साहब, बंदे में दम है, हिम्मत चाहिए ऐसी बात करने के लिए. रशिया डज नॉट हैव अ बॉर्डर एनीवेयर इन यूरोप सर. इट टचेज वाटर टू वाटर फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक. तीसरा भी जो स्कॉलर है सर, उसका नाम भी भाई पुटिन ही है. और यहां पर उसने एक तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है सर. ही सेज एनीबडी हु डज नॉट लव द सोवियत यूनियन डज नॉट लव रशिया. यानी कि सर ही इज ट्राइंग टू इंसाइट people in Russia to accept that Eurasianism is what Russia will strive for and you have to support it. Irredentism will be a consequence of that Eurasianism which you will not oppose it. इसी रीजन से आप देखो कि सर रशिया हैज बीन फाइटिंग अ वॉर विद यूक्रेन फॉर लास्ट 2 years and there is no opposition happening in Russia against that. There is no opposition. People don't oppose it because he has created a psyche amongst the people that anybody who does not love the Soviet Union does not love Russia. मतलब anybody who does not love that big Russia that it was at one point of time, number one, is not a true Russian, and he has already communicated that Russia will not stop till the time it achieves that erstwhile Soviet Union. समझ में आया ये पॉइंट? पुतिन की सोच देखो सर, ऐसे ही नहीं है वो व्लादिमीर पुतिन. वो सिर्फ बातें नहीं करता अखंड भारत की बेटा, वो अखंड रशिया बनाना भी चाहता है. यही फर्क है उसमें. चलो, how did the collapse of the Soviet Union lead to the end of ideology debate? What are the strategic consequences of the end of ideology debate in international politics, especially seen in the emerging cobweb model? Analyzed through the use of scholars, the unfolding global scenarios. The scholar that we are going to use here is basically called Samuel Huntington. Samuel Huntington, sir. अच्छा, Samuel Huntington came out with a essay. जैसे वो मिस्टर एक्स ने एक ऐसे लिखा था ना, सैम्यूल हंटिंगटन ने एक ऐसे लिखा है जिसका नाम है एंड ऑफ आइडियोलॉजी. अब व्हाट डज दिस essay say? He says कि sir, what has happened is that in the world since the end of the Cold War, there is not only triumph of liberalism and not only triumph of democracy, but there is triumph of a cobweb model of governance where non-state actors actually support the state actors in global governance. दो तीन चीजें हैं, बड़ी सिंपल है. ये कह रहा है कि भैया, पहली बात तो एक चीज याद रखना ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि जो बंदे की बात कर रहे हैं वो ऐसा नशे वाली बात क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अमेरिकन है. तो सैमुअल हंटिंगटन इज एन अमेरिकन. हिज एसे एंड ऑफ आइडियोलॉजी मीन्स कि भाई, what has happened in the world now is there is triumph of liberalism and democracy, so that debate of ideologically divided world is over, so therefore end of ideology. In a world which is today witnessing triumph of liberalism and globalism, is a world driven not only by state actors, but he says a cobweb which includes non-state actors also. And he says कि sir, these non-state actors today support what is called as global governance. Global governance. इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है
कि भाई नॉन स्टेट एक्टर्स, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि नॉन स्टेट एक्टर्स माइट वायलेट the sovereign space of an individual sovereign state, Samuel Huntington does not look at the world that way, sir. He says rather a non-state actor is a actor today that supports global governance by creating a cobweb where state non-state actor boundaries are redundant. इस कॉन्टेक्स्ट में कई बार ये बोला जाता है कि सैमुअल हंटिंगटन इज अ प्रोपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन because he advocates the fact कि sir the world is a global village today. So you have to make sure that the state and the non-state actors all collectively come together and promote what is called as global governance. So the end of the Cold War has not only ended ideology, where the ideology was the communist ideology, but the end of the Cold War has ended the ideology to create a cobweb world, which is a much more deeply integrated world. और last point याद रखना है कि Samuel Huntington was very critical of the communists because he was of the opinion that sir the communists were basically the hurdle in the cobweb. कम्युनिस्ट वर दी हर्डल इन द कॉब, उनकी वजह से जो है वर्ल्ड जो है इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था. ये चीज समझ आ गई थी आपको? क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अब आते हैं कि सर व्हाट इज द एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस एग्जामिन थ्रू द प्रिज्म ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी. व्हाट इज, व्हाई इज दिस थीसिस क्रिटिसाइज सर? सर एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस इज आल्सो नोन एज द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी and it has been proposed by another American scholar whose name is Francis Fukuyama. इसका नाम आपने सुना ही होगा, फ्रांसिस फुकुयामा. Francis Fukuyama says कि sir humanity has evolved. It has evolved from being a feudal society, then to a capitalist society, then from a capitalist to capitalist and socialist society, and finally again to capitalist society. Feudalism declined to give birth to capitalism. Capitalism then coexisted with socialism. Socialism, capitalism coexisted for a limited period of time before socialism declined, leading to triumph of capitalism. So therefore, triumph of capitalism proves the fact that only democratic peace in the world can sustain. Triumph of capitalism proves that only thing that can sustain is democratic peace, which can be brought only by capitalism. कैपिटलिज्म के सिवाय और कोई पीस नहीं ला सकता वर्ल्ड में. अच्छा सर, व्हाई दिस थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड टुडे is because it refuses to accept the fact that capitalism is nothing but a form of subjugation. भाई कैपिटलिज्म क्या है? It is a form of subjugation of the humans by owners of the means of production. So if it is subjugation by the owners of the means of production, then one thing is very clear, sir. कि in this scenario, whatever may happen, even if you say कि sir there is a triumph of capitalism, capitalism alone cannot sustain without accepting the fact that it has to do something for preventing the exploitation of humanity. कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि कैपिटलिज्म का ट्रायम्फ जरूर हो गया होगा, पर सर द ट्रायम्फ ऑफ कैपिटलिज्म डज नॉट मीन दैट द सोशलिस्ट थिंकिंग कैन बी इरेडिकेटेड. ये पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? सोशलिस्ट थिंकिंग कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, क्योंकि सोशलिस्ट थिंकिंग की भाई डूइंग समथिंग टू प्रिवेंट द सब्जुगेशन ऑफ ह्यूमैनिटी विल ऑलवेज रिमेन. समझ रहे हो आप? भाई आज की डेट में भी एक हार्डकोर कैपिटलिस्ट सोसाइटी जैसे इंडिया है, जिसमें हर चीज जो है वो बेच दो अडानी को, अंबानी को, उसके बावजूद भी
सरकार आज की डेट में आउटराइटली प्योरली कैपिटलिस्ट तो नहीं है, अभी भी गरीबों के हित में कुछ तो फंक्शनिंग कर रही है। आप गेम को समझ रहे हो? तो ये कह देना कि भाई आउटराइटली सब कुछ जो है अब सिर्फ और सिर्फ स्टेट के हाथ से जाके प्राइवेट सेक्टर को चला जाएगा, वो सिनेरियो अभी नहीं आया सर। So till the time capitalism continues to subjugate humanity, the socialist thinking will remain alive. So there is no end of history. There could be revival of history where capitalism might pave a way for socialism again. ये critics कहते हैं। क्लियर हो गया जी ये थॉट? चलो अगला क्वेश्चन है सर कि what is the neo-colonial resource zone thesis? What is the neo-colonial resource zone thesis propounded since the collapse of the Soviet Union? Which scholars have propounded the theory? What are its core tenets? Why is the thesis criticized? Sir, the theory has been propounded by a scholar named Jeffrey Garten. Jeffrey Garten, Garten, Garten. So what does the theory say? But theory says कि भाई today, since the collapse of the Soviet Union, the world has now started witnessing neo-colonial zones of geopolitics. These neo-colonial zones of geopolitics are those areas where all resources are concentrated. And because today economy is the reason for all military fights, so militaries are being used in these neo-colonial zones where resources exist. So therefore, what has happened is कि sir, since the collapse of the Soviet Union, the world is now witnessing a rise of neo-colonial resource zones. ये एक नया नजरिया है वर्ल्ड को देखने का कि नियो कॉलोनियल रिसोर्स जोन्स आ गए हैं, उन एरियाज में रिसोर्सेज हैं, वर्ल्ड का ऑब्जेक्टिव है उन रिसोर्सेज को कैप्चर करना, और वर्ल्ड का ऑब्जेक्टिव है कि उन रिसोर्सेज को कैप्चर करके बेसिकली इकोनॉमिक कंट्रोल बनाना. One reason why this theory is highly criticized today is because it has a terminology of colonialism. So there are many who believe that it is a revival of colonial idea. Because colonialism also happened for the fight of resource and there is an attempt to do the same again. So there is a revival of colonialism. दूसरा है कि सर criticism की it rejects or it is what we call as it is anti-diversity. Sir, why do we say it is anti-diversity? It is anti-diversity because it does not accept the fact that the world can exist with diverse resource zones and countries can have a right over their own resources. So neo-colonial resource zones means that the world again wants to create a scenario where all global resources are concentrated at one place rather than global resources being distributed equally. अच्छा, अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई वेयर इज दिस विजिबल टुडे द मोस्ट, इन व्हाट पर्टिकुलर आइडिया इज दिस विजिबल टुडे? नियो कोलोनियलिज्म रिसोर्स जोन थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी अगर आप बताओ मुझे. एक एग्जांपल. चैट बॉक्स में ना उंगलियों से टाइप करने की आवश्यकता है. कहाँ दिख रहा है जी आपको? बेटा सबसे बड़ा एरिया जहां पर ये नियो कॉलोनियल रिसोर्स जोन कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है अगर आज की डेट में, तो वो है ग्लोबल सेमीकंडक्टर रेस में. ग्लोबल सेमीकंडक्टर रेस. क्योंकि ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन फ्यू कंट्रीज. As the world's demand for semiconductors in the future rises,
you will observe a very peculiar thing that in this scenario, concentration of semiconductors globally at one place or few places will lead to conflicts and turmoils. अब आप अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द जोन ऑफ पीस एंड जोन ऑफ टर्मोइल थीसिस एंड व्हिच स्कॉलर्स हैव चैंपियनड द सेम. The scholar that has championed zone of peace, zone of turmoil theory, his name is basically Max Singer. मैक्स सिंगर जो है वो कोई गाने नहीं गाता बादशाह की तरह भारी कपड़े पहन के. मैक्स सिंगर उसका नाम है. He says a very important thing, sir. He says that because of the neocolonial resource zone theory, the world will be soon divided into zones of peace and zones of turmoil. And zones of turmoil will include all those countries where there is concentration of resource. And zones of peace will be all those countries where there will be only usage of the resource. Usage of the resource. So those areas with resource concentration are likely to witness more turmoil. And those areas that are going to become the consumers of resources or the finished product are going to be more of peaceful zones. So that means that Max Singer is trying to say an idea that countries with possession of resource are likely to witness conflicts. Or sir, case in point Iran. Case in point today Taiwan. Semiconductor manufacturing. Case in point South Korea, Japan versus China. और सर ये सेमीकंडक्टर के यूजर्स कौन है? यूरोपियन कंट्रीज. स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर. ऑस्ट्रिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर. कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं सर, दे आर कंज्यूमर्स. जोन ऑफ पीस. समझ आया जी? अब अगला स्कॉलर है सर जिसका नाम है मार्शल मैकलुहान. मार्शल मैकलुहान. McLuhan. मैकलुहान. क्या कहता है सर? ही सेज कि सर एंड ऑफ कोल्ड वॉर इज क्रिएटेड अ ग्लोबल विलेज. End of Cold War has created a global village. And in this global village, countries will generally peacefully coexist. तो इसने एक assumption दिया है कि लड़ाइयाँ नहीं होंगी. Countries will generally peacefully coexist. अगला स्कॉलर है सर रॉस मुनरो. रॉस मुनरो says opposite. He says sir कि global village means more conflicts. Because in a global village, accepting global diversity is tough. Attempts will be made to enforce conformity. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है सर. Efforts will be made to enforce conformity. So global village means more unstable world. समझ में आया ये? Either of the scenario will work out. अब एक टर्म है सर हेजेमनी. हेजेमनी का क्या मतलब होता है सर? एक सिंपल लैंग्वेज में इट मींस द एबिलिटी टू सेट रूल्स फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम. ability to set rules for the international system. अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे सर. हाउ डिड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन लीड टू द यूनिपोलैरिटी ऑफ यूएस? How was the American unipolarity achieved? Examine through the thesis of unipolarity through prism of scholars and present a scholarly argument of the polarity thesis. Scholar that we are going to use, his name is Charles Crothamer. Charles Crothamer. Charles. Charles Crothamer. Krathumer.
MER, क्रॉथमर, चार्ल्स क्रॉथमर। अब ये क्या कहता है सर? ये कहता है कि सर आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर व्हाट बिगैन वाज कॉल्ड एज द सिंगुलैरिटी थीसिस। सिंगुलैरिटी थीसिस का मतलब ये है सर कि ही सेज कि देयर वाज एन अटेम्प्ट मेड बाय अमेरिका टू propose to everybody in the world that everyone must unite to accept the American values. And there was an attempt after the collapse of the Soviet Union to enforce unipolarity through propagation of the term called American values. But sir, when countries began to react to that term, कि why should we go for something called American values? Charles Krothamer says that America immediately switched over to a new word, which was called the liberal values. Liberal values. ये ट्रेजेक्टरी को समझो सर। 2014 से लेके 2019 तक जो एंटी नेशनल थे वो 2019 से 2024 में अर्बन नक्सल बन गए। लोग वही हैं, शब्द नया है। अब भाई आप अपने ही देश के नागरिक को एंटी नेशनल तो कह नहीं सकते सर। आफ्टर ऑल उनके पास भी सिटीजनशिप तो इंडिया की है। तो एंटी नेशनल कहने का तो मतलब ये हो गया ना कि भाई आपके कंट्री में कोई इलीगली रुका हुआ है। अर्बन नक्सल। एक विवेक अग्निहोत्री नाम का व्यक्ति है, पिक्चरें बनाता है फ्लॉप टाइप की। बीजेपी के सारे लीडर एमपी एमएलए उसके पोस्टर चिपकाते हैं जा जाके। सोचो जब इन बीजेपी वालों के एमपी एमएलए के बच्चे बड़े होंगे, ये बताएंगे कि पापा जब छोटे थे एमपी एमएलए थे ना तो पोस्टर चिपकाते थे मूवियों के जा जाके पेशाब घर की दीवारों पे। विवेक अग्निहोत्री की पिक्चरों की अर्बन नक्सल वाली किताब लिखी है उसने। इतनी वाहियात किताब, मतलब मेरे 265 रुपए खराब हो गए। जिंदगी पे मेरे को चैरिटी उतनी नहीं चुकी जितनी ये किताब खरीदनी चुकी थी। फालतू किताब, मतलब बेबुनियाद, विदाउट एनी एविडेंस, फालतू चीजें हैं उसमें। Any person who does not subscribe to the view of the BJP is urban Naxal, as per his thinking. कि भाई सोच दूसरी क्यों है? तो यहाँ पर चार्ल्स ग्रोथमर ने भी यही कहा, जब कंट्रीज व्हेन दे स्टार्टेड अपोजिंग कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट अमेरिकन वैल्यूज, द अमेरिकans immediately replaced the word with what is called as liberal values. And he says that this singularity thesis has sustained since then till today with the same point called as the liberal value. Same point called the liberal value. अच्छा, अब he says a further important thing, sir. He says that USA has tried to create a hierarchy in the world. It says that it is at the topmost level of the hierarchy. All other countries that accept the hegemony of US are second rank countries. And those countries that do not accept the hegemony of US today, that means which are not the second rank countries, are countries that do not deserve a rightful place in the Committee of Nations. सोच देखो अमेरिका की कि भाई हम हैं तो हम हैं, हम ही हम हैं तो हम हैं। Those countries that accept the American hegemony are second rank countries. Those who do not accept do not have a rightful place in the Committee of Nations. So America decided to oppose them. ये चार्ल्स क्रोथमर कह रहे हैं। अब भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट तो ये है कि सर इंडिया डज नॉट कम अंडर द सेकंड रैंक। तो क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि सर विल अमेरिका गो अगेंस्ट इंडिया by saying that you do not deserve a rightful place in the Committee of Nations? See, America will officially never say that. But unofficially, America will do everything to make sure that India does not deserve a rightful space in the Committee of Nations. हमेशा ये इंश्योर करेगा। समझ रहे हो आप इस चीज को? अमेरिका ऑफिशियली कभी ये बात नहीं बोलेगा सर, और इंडिया भी कभी ये बात नहीं बोलेगा कि भाई वी वांट टू कम अंडर द सेकंड रैंक। भाई किसी चीज में तो फर्स्ट आना चाहते हैं ना हम लोग।
अब अडानी भी सेकंड ही है, फर्स्ट तो बना नहीं, तो कहीं तो फर्स्ट आए। तो ये चीज समझो आप। अच्छा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे सर। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ हेजेमनी? हाउ इज द थ्योरी ऑफ हेजेमनी प्रैक्टिस्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? व्हाट इज द प्रीमाइस ऑफ हेजेमनिक स्टेबिलिटी थीसिस सर? देखो सर, ये थ्योरी कहती है कि हेजेमनी अराइजेज बिकॉज ग्लोबल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। As the resources are globally distributed, some countries which want to basically get hold of those resources will try to initiate influence building and try to influence those states having resources politically, economically, and culturally. Resources are distributed unequally. Some countries want access to resources. They cannot directly go and invade a country and steal away the resource. So they will try to influence the country. The best way to influence a country having resources, try to exert political, cultural, economic influence over them, try to win over them through now what we can call sphere of influence, try to win over them through sphere of influence. If you are able to win them through sphere of influence, then you create a narrative to say that such influence brings peace, hegemony, stability, and peace theory. And if you are unable to use that influence to win over that country having resource, and for which you may have to lead to a fight, then the other country can shout and say कि sir, hegemony by any one nation is an attempt to destroy global peace. Sir, till the time America can convince countries having resources to sell the resources to America, America is a happy country, because then that country having resources can say कि I accept the hegemony of America. But the day that country says कि भाई I don't want my resources to be overly taken away by the Americans, I want to distribute those resources globally to everyone, immediately that country will not be conducive to global peace, because your hegemony concept has been negated by that. Case in point sir, America, India. India does not have any resource. अरे हमारे पास क्या रिसोर्स है, भूखे नंगे लोग हैं, एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स कुछ है हमारे पास? 1 मिनट में 60 बच्चे दे सकते हैं, फुर्तीले हैं सर. Problem with us is that we have a geopolitical location that America wants to leverage. Our location in the Indian Ocean, our location as a country having the longest land border with China. They want to leverage that. So if India allows its territory to be used, well and good, sir. If India rejects, then it is a rejection of American hegemony. America will try to disturb the hegemony by creating zones of turmoil around you. Case in point, the present Bangladesh crisis. भाई रेजीम चेंज इन बांग्लादेश करने का क्या लॉजिक था? यही लॉजिक था कि भाई इंडिया को एक मैसेज देना कि बॉस, योर रिजेक्शन ऑफ हेजेमनी मींस दैट वी कैन क्रिएट जोन्स ऑफ टर्मोइल अराउंड यू. और इंडिया ने कैसे चेकमेट किया यूएस के बांग्लादेश के गेम को? बाय जॉइनिंग हैंड्स विद चाइना. हमने चाइना को बोला अपने बॉर्डर मसले सुलझा ले, चाइना ने सुलझा लिए. क्योंकि हमने चाइना को बोला ना, देख भाई ऐसा है, अमेरिका ने अगर बांग्लादेश में रेजीम चेंज करके एक सीआईए एजेंट को वहां मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया है, तो बेटा धंधा तेरा भी कटेगा वहां पे. तो ये याद रखियो, कटेंगे तो बटेंगे. जब चाइना को ये बात समझाई, चाइना समझ गया. एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक चाइना श्रेष्ठ चाइना, आगे इकट्ठे. तो ऐसे गेम चलती है एक दूसरे की हेजेमनी को कट करने की. ये चीज समझ आई आपको? टिल द टाइम यू एक्सेप्ट माई हेजेमनी, इट्स ओके सर. You create a problem for my hegemony, I will create a zone of turmoil around you.
अब देखना नेक्स्ट जोन ऑफ टर्मोइल पता है कहाँ होगा सर? नेक्स्ट जोन ऑफ टर्मोइल होगा आपका म्यांमार में। म्यांमार में होगा रेजीम चेंज अगला, क्योंकि चाइना को वहां से हटाना है। एक बात बता रहा हूँ सर, ये अमेरिका ने ना एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है। ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, मैक्सेसी अवार्ड, फलाना अवार्ड फलाना अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स होते हैं उन लोगों को दिए जाते हैं जिससे सीआईए अपना एक आर्किटेक्चर तैयार करती है आपके देश में। आप एक कॉमन पॉइंट ऑब्जर्व करके देखना कि जितने भी रेमन मैक्सेसी अवार्ड विनर्स इंडिया में हैं वो प्रो इंडिया बात कम और प्रो एंटी इंडिया बात रादर ज्यादा करते हैं। 99% ऑफ देम, इफ नॉट 100%। वो 100% अमेरिका इसलिए नहीं करवाती, उसका रीजन भी ये है कि फिर उससे आउटराइटली प्रूव हो जाता है कि ये सीआईए का काम कर रहे हैं। तो दो चार रेमन मैग्सेसी अवार्ड ऐसे भी उनको भी दो जो थोड़े से प्रो इंडिया भी हैं, पर उनकी मात्रा कम, बाकी एंटी इंडिया वाले ज्यादा रखो। गूगल पे जाके सिर्फ सर्च कर लेना रेमन मैग्सेसी अवार्ड विनर्स इन इंडिया, और लिस्ट देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि 99% ऑफ देम एंटी इंडिया, 1% ऑफ देम प्रो इंडिया। आप देखना इसको, ध्यान से देखना। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर आने वाले समय में ध्रुव राठी को भी मिल जाए रेमन मैग्सेसी अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस। ऐसे ही लोगों को मिलता है सर। खैर उसको तो फीड करने वाले हमारे खुद के पूर्व इंटेलिजेंस के डीप स्टेट के अधिकारी लोग हैं, तो खैर उनका तो कुछ हो नहीं सकता। बट एनीवे, ये चीज क्लियर हो गई थी आपको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ डिड द यूनिपोलैरिटी लीड टू द राइज ऑफ अमेरिकन hegemony? Explain the thesis of American hegemony through the scholarly prism. What are the different scholarly theories used for explaining American hegemony? स्कॉलर नंबर वन सर रॉबर्ट गिल्पिन, GILPIN। तीन स्कॉलर्स हैं बेटा। रॉबर्ट गिल्पिन, he says sir end of cold war has created a scenario where America has emerged as the supplier of global goods, and because America has emerged as a supplier of global goods today, so as a result of which America has achieved what is called as its unipolarity. सेकंड स्कॉलर है सर पॉल कैनेडी। पॉल कैनेडी सेज कि सर अमेरिका has tried to ensure that it restricts Soviet space and rise of socialism again. And rise of socialism again. This has happened through use of academics as a institution. तीसरा बंदा है सर जॉन आइकनबेरी। आइकन, IKENBERRY, बेरी, आइकनबेरी। ही सेज कि सर अमेरिका in the unipolar world has emerged as a country where it has become the designer of global military rules. Become the designer of global military rules. So countries have to support America for their global military rules. तो ये तीन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने सर अमेरिकन यूनिपोलैरिटी को बताया एक्सप्लेन करते हुए कि अमेरिका ने अलग अलग कदम कैसे उठाए। अब आते हैं एक स्कॉलर पे सर, जो अगला बॉक्स बना हुआ है आपका। स्कॉलर का नाम है रॉबर्ट कागन, KAGAN, कागन। Sir Robert Kagan is a scholar who says that unipolarity has provided America with the global primacy. Unipolarity has provided America with global primacy that has put America way above the others. That has put America way above the others. तो ये चीज क्लियर हुई जी आपको कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है?
अब आते हैं इस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे सर हम, कि व्हाट इज द डिक्लाइनिस्ट थीसिस, which scholars are its propounders, and what does the thesis argue. But a declinist thesis जो है, it is a thesis proposed by a scholar named Robert Pape, PAPE. पंजाब का नहीं है जी, पापे नहीं है हमारा, रॉबर्ट पापे, PAPE. रॉबर्ट पापे कहता है कि सर अमेरिका इज अ कंट्री विच इज इन अ परपेचुअल डिक्लाइन. परपेचुअल डिक्लाइन. He says it is in a perpetual decline because of completely misaligned foreign policy. Misaligned foreign policy. Sir, he says that America has never known since the end of the Cold War what kind of foreign policy to adopt. What kind of foreign policy to adopt? It has undertaken what is called as foreign policy adventurism. Foreign policy adventurism. और वो कहता है कि दी कैंपेन इन अफगानिस्तान, दी कैंपेन इन इराक, दीज आर ऑल adventurist campaigns. America has never understood here in these campaigns what to do, how to do things. And they have not achieved anything except loss of trillions of dollars. And these adventurist wars and campaigns have put America in the state of perpetual decline. These wars and conflicts have put America in the state of perpetual decline. समझ आ गया जी. तो अमेरिका की यूनिपोलैरिटी मूवमेंट जो है सर वो परमानेंट नहीं है. अगला क्वेश्चन अगर आप देखो सर, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन हेजेमनी टुडे, हाउ डज इट अफेक्ट द इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. सर द स्कॉलर हियर इज नेम्ड जॉन मियर शाइमर. मियर, MEAR, शाइमर, SHIMER, मियर शाइमर, जॉन मियर शाइमर. बहुत बढ़िया बंदा है ये, इसकी किताब बड़ी अच्छी एक है यूएस इजराइल लॉबी पे. जॉन मियर शाइमर सेज कि सर अमेरिकन ग्लोबल हेजेमनी हैज बीन वीकेंड बाय टू इवेंट्स. वन, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. टू, global financial crisis. The global war on terror and global financial crisis have constrained America to establish a new narrative of hegemony in the world. ये कह रहा है कि सर ये दो इवेंट्स जो है ना सर, ये ऐसे ट्रिगर्स थे कि इनके कारण अमेरिका जो है वर्ल्ड के अंदर एक काउंटर नैरेटिव इसके बाद पेश ही नहीं कर पाया. एंड दूसरा फिर ये कहता है कि सर अमेरिकाज illogical behavior of continuing with the INF treaty. INF treaty पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में. America's illogical behavior to continue with the INF treaty even after the end of the Cold War, he says, gave space to China to increase their armament, thereby constraining America's military capability. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सर when Trump came, he withdrew from the INF treaty. And we also saw that, sir, Russia was used as a shield to actually withdraw the treaty when the idea was to tackle China. So, sir, John Mearsheimer has identified two big constraints. One is the economic constraint, global financial crisis, and the drain through the global war on terror. And second is the military constraint that he has identified, which has happened because of INF treaty and its continuation till 2017. अच्छा अब देखो, अब how has it affected the global architecture is in this manner that because of these two particular incidents, what has happened is कि sir America has lost an effective counter narrative in the world. And in the absence of an effective counter narrative, the Chinese narrative of the Belt and Road Initiative that has emerged
has put countries in a dilemma. अब आप चीज को समझो बेटा। जॉन मियर शाइमर ये कह रहा है कि सर बिकॉज ऑफ अमेरिकाज डिक्लाइन caused by various factors and its inability to come out with a counter narrative gave space for China to promote BRI. Today, countries in the world are in a state of confusion कि whether we should embrace BRI or not, or should we embrace America or not, because we know America is not in a position to become the global good supplier. China is trying to, through BRI, position itself as a global good supplier. Who will be more reliable, we do not know today. So John Mearsheimer ends his argument by saying an important point कि sir, the world has entered into a era of credibility crisis. The world today does not know who may be a credible provider of global goods, whether it is America, which is already witnessing a decline due to certain events, or whether it is China, which is offering BRI as an alternative. Point clear हुआ ये? We do not know. So biggest effect to the international political order is कि sir, international political order is in a dilemma. International political order is confused. It is unable to decide who may be an appropriate, reliable global provider. And as a result of which, with multiple countries emerging as competitors of becoming global providers, will push the world more into uncertainty. So, sir, in this context, ये मत बोलना sir, Trump's America first will be a relatively better proposition because America has to reinvent itself. If America today wants to emerge as a counter to China, sir, America cannot counter China by engaging with Bhukanangas like India, sir. It has to counter China by first strengthening its own household. Unless or until Americans themselves do not grow, America cannot reposition itself today as a capable player. समझ रहे हो आप? सो सर अब आपको समझ आएगा कि ट्रम्प की इमिग्रेशन वाली पॉलिसी, ट्रम्प की H1B वीजा वाली पॉलिसी, देखो सर इन दोनों पॉलिसी से ना इफेक्टिवली हमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई इलीगल इमिग्रेंट जो है वो यूएसए नहीं जाता सर, वो कनाडा जाते हैं, हरियाणा पंजाब से लड़के कच्चे कागजों से। भाई हमारे यहाँ से ज्यादातर जो लोग जाते हैं अमेरिका, या तो गुजराती जाते हैं और या फिर वो रेड्डीज जाते हैं वहां से अपने साउथ इंडिया से। गुजराती जो जाते हैं वो बिजनेस के लिए जाते हैं, और जो रेड्डीज जाते हैं वो अपनी आईटी जॉब्स के लिए जाते हैं। ट्रम्प ज्यादा से ज्यादा आगे ये कहेगा कि भाई आईटी की जॉब्स जो है लोकल लोगों को दो। हमारी कंपनियां जो है ना वहाँ पे, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये लोकल अमेरिकन को रिक्रूट करना चालू कर देंगी। और फिर पॉइंट ये आएगा कि लोकल अमेरिकन स्किल होगा नहीं, तो फिर ट्रम्प को बोलेंगे कि भाई देख लो हमने तो सैचुरेट कर लिया, अब हमें वीजा देना है, दे दो। जितने लोकल टैलेंट था उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, लेकिन बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, इकोनॉमी कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, इकोनॉमी कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसी ऐसी नैरेटिव चलाओ और उसको बोल दो वीजा मिल जाएंगे वापस। तो ये चीज को समझो सर आप, हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। इलीगल इमिग्रेशन में सबसे बड़ा इफेक्ट पाकिस्तान को होगा। इलीगली पाकिस्तान वो करते हैं अमेरिका में जाके जो इलीगली हम यहाँ से करते हैं कनाडा में जाके, ब्रिटेन में जाके। अरे मेरे फैमिली में यार, मेरे फैमिली में मेरी, कैसे मैं समझाऊं, मतलब मेरी जो बुआ की बेटी है उसका जो हस्बैंड है, वो मेरा जो भी लगा, उसकी जो रियल सिस्टर है, उसकी रियल सिस्टर का जो हस्बैंड है, उसके जो हस्बैंड के पेरेंट्स है ना, वो लंदन जाके उन्होंने अपने पासपोर्ट फाड़ दिए। अब वो वहीं बसे हुए हैं। अब वो दे कैन नॉट कम बैक टू इंडिया, और ना उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, इलीगल रूट से गए थे। और वो पता है कैसे गए थे? अफ्रीका के थ्रू सर, बोट में, शिप में बैठ के पैसे ले जाते हैं वो 30-40 लाख रुपए लेके, वो ले जाके कार्गो के अंदर छिपा के ले गए वहां पे, वो वहां पहुंच के पासपोर्ट फाड़ दिया। अब ना वो वापस आ सकते हैं और ना ही वो ब्रिटिश पासपोर्ट पा सकते हैं। तो ये करते हैं लोग, उनको समस्या आएगी, हमें नहीं आएगी। तो अमेरिका हैज टू री इन्वेंट इटसेल्फ सर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे सर, एग्जामिन थ्रू द प्रिज्म ऑफ स्कॉलर्स that how emergence of Sino-US rivalry is a cause of declining American hegemony. Sir, the most important scholar here is Peter Frankopan. Peter Frankopan. He says कि sir, today in the post-West order,
Post-West order means the world order that emerged after the end of the Cold War. What has happened is that China has utilized that time period for emerging as a technological superpower. And it has basically undertaken America by innovating technology so much that today, if America wishes to catch up to China, it need not fight a military war, but it needs to fight a technological war. So the heart of the heart of the US China rivalry is not military, sir. At the heart of the US China rivalry today is basically the economy. Is basically the economy. ये चीज समझ आई आपको? और वो ये कह रहा है पीटर फ्रैंकोपैन कि सर अनलेस अमेरिका डज नॉट इम्पोज टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस ऑन चाइना, इसी रीजन से ना पीटर फ्रैंकोपैन की इस समस्या को हम कहते हैं कि ही इज अ हॉक. हॉक बिकॉज ही सेज कि सर दे मस्ट इम्पोज सैंक्शंस ऑन चाइना, टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस. आप समझ रहे हो? पर प्रॉब्लम क्या है कि सर हाउ विल यू टेक्नोलॉजिकली आइसोलेट चाइना? चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी इलीगली तो प्राप्त नहीं की. जो भी टेक्नोलॉजी उसने प्राप्त की है सर, वो उसने प्राप्त उस स्पेस में की है जो स्पेस अमेरिका ने छोड़ी थी. क्योंकि उस समय अमेरिका जो है बिजी था सबको कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोन पापड़ी खिलाने में. लो भाई मैं ग्लोबल सुपर पावर बन गया, ले सोन पापड़ी का. तो समस्या ये थी सर. सो हाउ इफेक्टिव विल बी द अप्रोच ऑफ पीटर फ्रैंकोपेन इज अ डिबेटेबल इशू. But sir, let's understand that the heart of the rivalry is not a military fight, which the Americans had during Cold War with Soviets, but it is basically the technological fight. अगला क्वेश्चन है सर कि हाउ इज द राइज ऑफ चाइना इन एशिया अफेक्टिंग द एशियन पावर इक्वेशंस एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एशियाज इंटरनेशनल रिलेशंस. सर यहाँ पे द स्कॉलर दैट वी आर गोइंग टू यूज इज स्कॉलर्स नेम इज डेविड शनबॉग. डेविड शनबॉग, SHANBAUGH, शनबॉग. Sir, he says a very important thing. He says that what America has done is that after the end of the Cold War, the Americans basically neglected Asia altogether. They were busy in displaying their power all through the Europe. One reason why that happened is because he said the Cold War happened in the European theater when Russia as a state declined. America had to prove to Europe that with their support they decimated Russia. So America's efforts in the post-Cold War period to distribute Son Papdi were basically happening in the European sphere. European sphere. आप समझ रहे हो? Because they wanted to showcase to the Europeans that because of your support we were able to decimate Russia. But sir, the problem is even when the Americans were busy doing that, they forgot that Asia was a territory that required global goods. They forgot that Asia is also a territory which embraced globalization and needed support. And in the absence of America in Asia at that time, to provide that necessary support, China stepped in. China began to provide those global goods. Whether it is in Central Asia through SCO, whether it is with a deeper relationship with Pakistan through development, or whether it is all over Asia from Central Asia, South Asia to Southeast Asia today through BRI. China emerged as that global good provider in Asia at the infrastructural level, which USA could have done. So USA lacked that foresight.
कि दिस एरिया रिक्वायर्ड हार्ड सपोर्ट. हार्ड सपोर्ट नॉट डज नॉट मीन मिलिट्री सपोर्ट सर. हार्ड सपोर्ट मीन्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट. इसी रीजन से आप देखो सर कि टुडे नाउ यू विल अप्रिशिएट द फैक्ट दैट व्हाई यूएसए इज अ लेट कमर. Today it wants to counter the BRI through I2U2. It wants to counter the BRI through Indo-Pacific. It wants to counter the BRI today through India, Middle East, European Union Economic Corridor. All these manifestations of USA, Indo-Pacific, I2U2, IMEC are an attempt to catch up with the BRI. Because China utilized the space the Americans gave, sir. देखो इस पूरे डिबेट से एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी सर कि अमेरिकन्स आर पीपल हु ऑलवेज लैक फोरसाइट. और ये बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्योंकि अमेरिकन्स हैव दिस हैबिट ऑफ टेकिंग एन एक्शन एंड देन थिंकिंग कि अब क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि सर वी कीप थिंकिंग कि क्या एक्शन लेना, तब तक एक्शन ही रिडंडेंट हो जाता है. हम सोच ही रहे होते. चाइना के साथ दिक्कत क्या है ना सर, क्योंकि उनकी आंखें छोटी खुलती हैं ना सर, तो वो चीजों को देखते भी कम है और फिर सोचते भी कम है, और सोचते कम है एक्शन ज्यादा जल्दी ले लेते हैं. हमारी आंखें देखो इतनी बड़ी बड़ी डायन जैसी आंखें इंडियंस की. समस्या है सर. वी प्रोसेस टू मच, टेक टू मच, अप्लाई ब्रेन टू मच. चाइनीज सर बेस्ट पीपल, स्मॉल आई, लिमिटेड व्यूइंग, लिमिटेड व्यूइंग, लिमिटेड प्रोसेसिंग, मोर एक्शन. अमेरिकन बस ये हर जगह ही देखते रहेंगे, इसके अंदर क्या है, वहां क्या है, ये खोल वो खोल. फर्क है सर. ये समझ आ गया जी. तो ये वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया. थक गए हो? थोड़ा सा ब्रेक ले लो. एक काम ये करते हैं कि अभी 5:10 हुए हैं ना, तो 5:45 पे स्टार्ट करते हैं. मैं क्या करता हूँ कि ये वाली क्लास को यहीं एंड कर देता हूँ, एक नेक्स्ट क्लास शेड्यूल कर देता हूँ, क्योंकि फिर वो जो जब आप रिकॉर्डेड देखते हो ना, तो फिर उसमें वो अननेसेसरी ब्रेक सा आता है, वो स्क्रीन ब्लैक हुई हुई. उससे बेटर है कि न्यू क्लास शेड्यूल कर देता हूँ. ठीक है. तो जाओ चाय वाय पी लो, समोसे खा लो थोड़ा. तब तक फिर 5:45 पे मिलते हैं. 5:45 से फिर आगे बढ़ते हैं. चलो.